ओके गाइस, तो आज हम लोग लाइव के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई एम ऑन द डॉक्स राइट नाउ। सो व्हाट इज लाइव किट? आपने कभी ये यूज़ किया है अगोरा वीडियो वगैरह या फिर और भी टूल्स या फिर जूम का भी केपे है जिससे आप जूम कॉल्स वगैरह बना सकते हो? तो एक्चुअली क्या होता है, ये WebRTC का प्रोटोकॉल होता है जो घर पे होता है। तो इसके द्वारा आप मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स या फिर मल्टीपल यूजर्स को एक सेशन में डाल के एक रूम बनाकर उसमें आप बात कर सकते हो। सब लोग जैसे आप गूगल मीट यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करते हो या फिर जूम यूज़ करते हो, वो सेम टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं WebRTC। तो LiveKit इज अ सॉल्यूशन टू दिस ओनली। दिस इज एन ओपन सोर्स सॉल्यूशन। तो इसका सारा कोड ओपन सोर्स है, आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और हम लोग LiveKit में काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे इस प्लेलिस्ट में। सो दिस विल बी अ continuous playlist, and this is the first video right now. So first we will create a simple Meet application where you can chat, where you can like call with another person. You can just do something like that sort. Simple one. Then we have AI agents in LiveKit. We will also cover this in very detail. Like I have built multiple applications over this AI agent, so we'll cover this. This is telephony. What is telephony? Telephony is like Twitch. आपको अगर आपको Twilio के साथ इंटीग्रेट करना है, okay? मान लो आपको ट्विलियो के साथ इंटीग्रेट करना है, तो आप किसी को कॉल लगाते हो तो वो अभी क्या प्रोटोकॉल यूज़ होता है, वो ट्विलियो अपने सर्वर पे हैंडल करता है, जिससे वो कॉल जाता है दूसरे पर्सन को और वो फिर बात कर सकते हो आप लोग। इस SIP के थ्रू ये कॉल ट्रंक हो जाएगा। और ट्रंक मतलब आप समझो कि वहाँ से कॉल कट हो जाएगा और LiveKit के सर्वर पे आ जाएगा, और LiveKit के सर्वर पे थोड़ा उसको कॉल लगेगा दूसरे बंदे को, और जो ट्रांसमिशन होगा वो LiveKit के सर्वर के थ्रू होगा। ओके, तो ऐसे काम करेगा SIP। तो ये भी हम लोग कवर अप करेंगे ट्विलियो वाले पार्ट में। Recipes and references are simple thing that you can build over this thing, so it just covers those part, otherwise there's nothing else. So we will build most of these things. So let's start with the exact application. So we will go with cloud dashboard. So this is how the dashboard will look for you. So this is how the dashboard will look for you guys. There will be analytics. So this is how the dashboard will look for you guys. There will be analytics, there will be sessions, there will be egresses, there will be ingresses. So what is egress? Egress आप इमेजिन करो, जब आप रूम बनाते हो गूगल मीट पे या फिर बेस्ट एग्जाम्पल जूम पे आप रूम बनाते हो तो उसमें ऑप्शन आता है प्लीज रिकॉर्ड दिस रूम, करेक्ट? वो क्या करता है, उस पूरे सेशन या उस पूरे रूम में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सबको, ऑडियो, उनका वीडियो, उनका ट्रांसमिशन, उनका चैट, सबको रिकॉर्ड कर लेता है और आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो एग्रेस की वही चीज़ है, हम लोग इसको यूज़ करेंगे, हम लोग S3 या गूगल क्लाउड पे सेव करेंगे इसके डेटा को। ओके, उसके बाद आता है इनग्रेस। इनग्रेस इज नथिंग मोर दैन दिस इज द थिंग दैट जब आपके लैपटॉप से वीडियो LiveKit के सर्वर पे जा रहा है तो उसको इनग्रेस कहते हैं। ओके, तो आप ट्रांसमिट कर रहे हो ऑडियो वीडियो तो इनग्रेस होता है। इनग्रेस मतलब अंदर आना, एग्रेस मतलब बाहर जाना। ओके, let's go to the settings. Settings have all the main things like we will need project URL, SIP URI. This is will be used for the Twitch thing, Twitter thing, sorry, Twilio thing. And then we have keys. Keys are nothing, just the API keys which we will use. Webhooks, I guess most of the people know what webhooks are. They are covering LiveKit, and most of them must have used like integrated these things before. Then they are covering LiveKit. LiveKit is an advanced topic in full stack development. There's nothing like you can start with easy ones like HTML, CSS, these things. That this is not for you guys. So this is an intermediate part of thing. So what is webhooks? Webhooks are like simple things. If you have integrated Stripe into any application, आपने ये जरूर देखा होगा जब आप पेमेंट करते हो तो एक इवेंट आता है कि पेमेंट सेशन इंटेंडेड हो गया, कैंसिल हो गया या फिर फेल हो गया, ये सारे इवेंट्स आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वेबबुक्स आप एक सर्वर बनाते हो, सर्वर वन साइडेड इवेंट सेंड करता है, आप उसको बस रिस्पॉन्स देते हो 200 की मैंने रिसीव कर लिया, आप उसको वापस डेटा भेजते हो लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसको बस 200 रिस्पॉन्स देना होता है। और आप कुछ भी भेज सकते हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप कोई मतलब नहीं होता। तो ये वन वे इवेंट होता है, वन वे डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है, जिसमें सर्वर जिसमें कुछ एक्शन प्रोवाइड करो वो सर्वर आपको इवेंट भेजता है कि हाँ ये एक्शन हो गया, ऐसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ आपको डिटेल आ सकता है उस इवेंट्स में। तो आप वेबबुक डिज़ाइन कर सकते हो। वी कैन डिज़ाइन दिस लेटर ऑन
maybe in another course or any other tutorial. Not this is not covered. This will not be covered in the LiveKit thing. But so yeah, this is a simple web. It's a very simple thing actually. So let's move forward then. तो हम लोग ये डिज़ाइन करेंगे वेबबुक्स, हमें रिकॉर्ड करना होगा इन सब चीज़ों को, हमें वेबबुक्स चाहिए होगा. Then we have Sandbox. This is the important thing. They have just launched this in beta right now. So they just launched this thing right now. It's a very new thing. This is billing. So and you can use this for free if you can create a project over here. This will not cost you anything. Okay. So let's go to Sandbox. We will cover this part later on in this playlist, but now we will move forward this simple Meet application. You can just create on this Create app. When you will create this, will create a Sandbox app. You can just launch over here. And if you want to do it locally, you can just copy the GitHub code from over here. You can start the meeting. You can allow everything over here. So this will allow the microphone, this will allow the camera. This will allow the camera, this will allow the microphone. Let's enter my name as Anish Pras. You can join the room. Just join the room. I can share my screen, I can chat, just chat, hi. This is hi. If someone else joins, they will see this hi from Anish Pras. So we'll cover that part also, but this is not for this video. So let's see, this is what we will build from scratch. And you can have the GitHub code over here, and you can also, this thing will not cover on this thing, like in the GitHub code. So simple demo, you can have it from GitHub. You can click on this link and you can check this out. You can just follow the steps over here, pnpm install, env copy, add the variables, and you can just pnpm there. Pnpm is nothing like simple npm. If someone don't know this thing, just Google it, you will get it. And this will start on localhost 3000. Okay, so we'll cover this part in the next video. Okay, so that's it for this video. If you have anything else, you can just comment in the comment box, and please subscribe and share this video among you guys. And yeah, that's it. Bye bye. Have a nice day.